Development of Indian writing. Indian writing in English. History and an overview. Though foreign in its origin, English has been adopted in India as a language of education and literary expression, besides being an important medium of communication among the people of various regions. The beginning of Indian literature in English is traced to the end of 18th century and the beginning of the 19th, by which time English education was more or less firmly established in the three major centers of British power in India: Calcutta, Madras, and Mumbai. Ram Mohan Roy, 1774 to 1833, a social reformist from Bengal who fought for widow remarriage and voting rights for women, was the pioneer of Indian writing in English. Roy insisted that for India to be included among the world's nations, education in English was essential. He, therefore, campaigned for introduction of scientific education in India through the English medium. So, how Indian writing has adopted English? English has foreign origin. English विदेश में जन्म लिया, बट इसे इंडिया में किस तरह से अडॉप्ट किया गया? सो इट वॉज द बिगनिंग इन द 18th सेंचुरी. जब 18th सेंचुरी का एंड एंड 19th सेंचुरी के बिगनिंग थे, उस टाइम इंग्लिश को हमारे इंडियन एजुकेशन में शामिल करने की बात की गई, जब ब्रिटिश पावर मेनली कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ये तीन सेंटर पे अपना कब्जा जमा चुके थे. Raja Ram Mohan Roy, this is their birth and the death time. So he was a social reformist और वो बंगाल से थे. उन्होंने विडो रीमैरिज, विधवा विवाह के को समर्थन दिया एंड वोटिंग राइट फॉर वुमेन, और बहुत सारी महिलाओं के अधिकार के लिए वो लड़े और आगे आए. उन्होंने ही इंग्लिश को इंडियन राइटिंग में लाने की बात की एंड ही इंसिस्टेड. उन्होंने इस बात पे काफ़ी जोर दिया कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, वर्ल्ड्स नेशन में शामिल होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन में हो. ओके, सो दैट्स वाई ही हैड कैंपेन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन. उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कैंपेन किया और इंग्लिश मीडियम को लाने की बात की. Raja Ram Mohan Roy was followed in the early 19th century in Bengal by the poets Henry Thoreau and Michael Madhusudan Dutt. Dutt started out writing epic verse in English, but returned to his native Bengali later in life. तो राजा राम मोहन रॉय को फॉलो करने वाले लोगों में से हेनरी डेरोजियो एंड माइकल मधुसूदन दत्त भी थे, जिन्होंने दत्त के बारे में कहा गया है कि इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े एपिक वर्ड्स लिखे इन इंग्लिश, लेकिन आगे चल के वो वापस अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बंगाली में ही लिखना शुरू कर दिए. द पोएम्स ऑफ टोरू दत्त from 1855 to 1876, who died at a tender age of 21, and the novel Raj Mohan's wife was Bankim Chandra Chatterjee, have received academic acceptance as the earliest examples of Indian literature written in English. तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, तोरू दत्त एंड देन बंकिम चैटर्जी. ये लोग जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए फॉर राइटिंग इन इंग्लिश दैट टाइम. Toru Dutt not composed poetry in English, but more interestingly translated French poetry as well. Toru Dutt ने एक भी पोइट्री इंग्लिश में नहीं लिखी, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने फ्रेंच पोइट्री को ही कन्वर्ट किया इन इंग्लिश. Her best works include ancient ballads and legends of Hindustan. उनके बेस्ट वर्क्स में से है
कुछ ancient ballad and legends of Hindustan. However, the most famous literary figure of this era was Ravindranath Tagore, 1861 to 1941, who won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his book Gitanjali, which is a free rendering of his poems in Bengali. इन सबसे ज़्यादा फेमस नेम हमने जो जाना है दैट इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर और उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन लिटरेचर में इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि विच इज़ फ्री रेंडरिंग ऑफ हिज पोएम इन बंगाली उन्होंने बंगाली में बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं सो फॉर दैट गीतांजलि वॉज अवॉर्डेड फॉर नोबेल प्राइज नेक्स्ट नेम इज़ Sarojini Naidu, 1879 to 1949, was a great poetess whose romanticism charmed readers in India and Europe. Her Golden Threshold in 1905 and The Broken Wing in 1917 are works of great literary merit. So Sarojini Naidu के ये कुछ credited work है that is her Golden Threshold जो 1905 में रिलीज हुआ एंड द ब्रोकन विंग इट वॉज पब्लिश इन 1917 सो दे वर ऑफ ग्रेट मेरिट Aurobindo Ghosh 1872 to 1950 was a poet, philosopher and sage for whom poetry was akin to a form of meditation. Next name is Aurobindo Ghosh जो कि not only philosopher and a poet, he was also a sage. तो उनके लिए poetry was like a meditation, एक तपस्या के समान था. This epic, his epic Savitri and Life Divine, 2 volumes of it, are outstanding works in English literature. तो इनके कुछ poets के name, this is Savitri and Life Divine के 2 volumes. ये सब आउटस्टैंडिंग वर्क्स में माने जाते हैं इट मे बी मेंशन दैट most Indian writers in English from the early period hailed from Calcutta, the first stronghold of British, then other places in the country. तो ऐसा माना जाता है कि बिगनिंग के जितने भी इंडियन राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा वो सभी मैक्सिमम ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम कैलकटा वो कलकत्ता से ही आगे आए जो कि ब्रिटिशर्स का मेन होल्ड था इट वॉज अ काइंड ऑफ पावर सेंटर फॉर द ब्रिटिशर्स The freedom struggle resulted in a revolutionary brand of writing that voiced sentiments against the British Empire. और फिर फ्रीडम स्ट्रगल आया जब बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उस टाइम राइटिंग जो है मेन इट वाज लाइक अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर को बाहर निकालने में उस टाइम की राइटिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा सेवरल political leaders from different parts of the country emerged as literary figures such as Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Kasturi Ranga Iyengar and T. Prakasam. ये कुछ नाम हैं जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में अपने राइटिंग को शामिल किए. The English language became a sharp and strong instrument in the hands of Gandhiji, who edited and wrote for papers like Young India and Harijan. ये दोनों न्यूज़पेपर के नेम हैं जहाँ पे गांधी जी ने अपने राइटिंग से और लोगों को उजागर किया. He also wrote his autobiography, My Experiments with Truth, which is known for its literary fame. काफ़ी renowned हुआ उनका ये autobiography that was written by Mahatma Gandhi, My Experiments with Truth. Jawaharlal Nehru, 1889 to 1964, stands out as another prominent leader who excelled in writing prose. तो अब तक हमने पोइट्री की बात की अब हम प्रोज की बात कर रहे हैं जिसमें आफ्टर महात्मा गांधी अनदर नेम इज जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भी काफ़ी एक्सेल किया. He is particularly remembered for his glimpses of world history, discovery of India and an autobiography.
in 1936. तो ये तीन नेम जो है glimpses of world history, discovery of India and an autobiography. ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए थे. These are some of the excellent examples of prose which came before freedom of India. Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao were among the earliest Indian novelists writing in English, who began to write in the early 30s. ये कुछ नाम हम देख रहे हैं. They came as the novelist, best novelist of that time, that is Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao. Mulk Raj Anand, before 1905, best known for his short story The Lost Child. It's a very famous one and has written numerous works of prose, poetry and drama. So, मुल्क राज आनंद ने बहुत सारे पोइट्री ड्रामा प्रोज लिखा है जिनमें से हमें द लॉस्ट चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा, इवन टुडे आई कैन सी दिस स्टोरी इन मेनी बुक्स. His novel Schoolie in 1933, Untouchable in 1935, and The Woman and the Cow in 1960 reveal his concern for the downtrodden and underprivileged in India. उन्होंने बहुत सारे जो underprivileged people हैं उनके बारे में भी लिखा है और उन्हीं की कहानी है like Coolie and Untouchable, The Woman and the Cow. इसमें हम रियल इंडिया को देख सकते हैं. R.K. Narayan is another prolific figure in Indian English writing. Most of his work, starting from his first novel, Swami and Friends, in 1935, is set in the fictional town of Malgudi, which captures the Indian ethos in its entirety while having a unique identity of its own. इन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स एक नॉवेल लिखा और ये पूरी कहानी जो है दैट इज़ इन अ फ्रिक्शनल टाउन. फिक्शनल टाउन का मतलब है कि ये रियल में नहीं है. इन्होंने एक बनावटी टाउन बनाया जिसका नाम रख दिया मालगुड़ी और इट वॉज वेरी मच फेमस नॉट ओनली दैट टाइम इवन टुडे. Malgudi is perhaps the single most enduring character R.K. Narayan has ever created. R.K. Narayan ने एकमात्र मालगुड़ी एक अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसे इन्होंने R.K. Narayan ने बनाया. Bachelor of Arts in 1937, The Financial Expert in 1952, The Guide 1959, and Waiting for the Mahatma 1955 are his other popular novels. The last of the habigers of Indian English literature is Raja Rao, 1909, whose novel Kantapura, 1938, set in rural India, established him as a major figure on the Indian literary scene. Raja Rao's other three novels are The Serpent and the Rope in 1960, The Cat and Shakespeare in 1965. Neeraj Chaudhary, 1897 to 1999, was another internationally renowned Indian writer whose autobiography, An Unknown Indian, 1951, catapulted him into a celebrated international author. So हमने यहाँ पे देखा एक आर के नारायण के कितने सारे पॉपुलर राइटिंग्स हैं एंड देन वी सॉ दैट इज ऑफ राजा राव. इनका नॉवल कांतापुरा वॉज वेरी मच फेमस एंड देन द लास्ट वन दैट वी सॉ दैट इज नीरज चौधरी. He died recently only in 1999. He was a celebrated international author. We move further with some more names. Later novelists like Kamla Markandaya, Nectar in a Sieve, Some Inner Fury, A Silence of Desire, Two Virgins. ये सारे इनके writings हैं. Manohar Malgolkar, Distant Drum, Combat of Shadows, The Princess, A Bend in the Gangas, and The Devil's Wind. Anita Desai's
Clear light of day, the accompanist, fire on the mountain, games at twilight, and Nayantara Sehgal captured the spirit of an independent India, struggling to break away from the British and traditional Indian cultures and establish a distinct identity. पीछे हमने कुछ नेम्स पढ़े एंड एडिंग टू दीज ऑल्सो ये सारे राइटर्स हैं जिनको पूरा श्रेय जाता है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के होते हुए इंडिया में इंडियन राइटिंग को वेल इस्टेब्लिश किया और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई.